Hello everyone. Today we are going to start a very new chapter, that is the laws of motion, that is the chapter number 5 of NCERT class 11 physics. So as we all know, this is one of the most important chapter. So all of you listen carefully, all the important concepts we will discuss, and we also discuss all the important examples of NCERT. So let us start the chapter, laws of motion. So the very first topic in laws of motion we are going to discuss about is the force. So here you can see on the screen that what do you mean by the term force? Force क्या है? फोर्स का मतलब क्या होगा? देखिए, फोर्स इज सिंपली एन इफेक्ट. ये एक इफेक्ट है. फोर्स का मतलब है एक इफेक्ट है. ड्यू टू दिस इफेक्ट व्हाट हैपेंस? It changes the shape of a body or the state of a body or velocity of a body. These all changes can be brought by the application of force. Okay, so this is force is simply a physical quantity. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, या फिर शेप को चेंज करता है, या फिर साइज को चेंज कर सकता है. ये सभी को हम, ये जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका इफेक्ट है, उसे हम फोर्स कहते हैं. ठीक है, तो वेरी सिंपल, इट इज सिंपली एन एक्सटर्नल एजेंट. हियर डेफिनेशन इज रिटन that can change the shape, size and state of a body. Here all of you, now you see its SI unit, as we all know, its SI unit is given by Newton. And what is its CGS unit? CGS unit, it is given by dyne. We all know the relation between Newton and dyne. So 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. This is the relation between the CGS and SI unit. Okay, so here one statement is written, you can see net force is responsible for changing the velocity or acceleration. So here you see the net force. Whenever there will be a net force on a body, then only its velocity will change, its state will change, or its shape and size may change. You can see here an example. Suppose on a horizontal surface, a simply a box is present or mass of m is present. When you apply a force of 100 Newton on the block along the x-axis, positive x-axis, and you apply another force of 20 Newton on the block on the negative x-axis. So here you can see that there will be some amount of net force here. So here the net force will be 80 Newton. So whenever there will be a net force on the body, then what happens? Its velocity changes. If it is in a state of rest, then it will start to move, it will continue to move, it will change its state. Similarly, if it is in uniform motion, then it will start to accelerate, it will increase its velocity, or it may decrease its velocity depending upon the force and its direction. Okay, so this is what is the effect of force. So hence we can conclude that net force is required to bring a change in the velocity of a body, or whenever net force is acting on a body, the body will now move under acceleration. It will accelerate or it may deaccelerate. Clear all of you? Now you see, I will discuss some of the different types of forces. What are the different types of forces present in our day-to-day life? So you must have encountered the frictional force, which is one of the important force. About frictional force we are going to discuss in the upcoming lectures. We'll discuss about frictional force. Gravitational force, a separate chapter is there. Chapter number 8 will discuss about gravitational force. And applied force, that is the external force. Spring force, magnetic force, electrostatic force. These are certain kinds of forces which we are going to which we always face in our day-to-day life. Okay, these are different forms of forces or different types of forces which we encounter in our day-to-day life. ये सभी different types का force रहता है. ठीक है, तो चलिए अभी हम चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करते हैं. यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला मेन टॉपिक, दैट इज इनर्शिया. So this is one of the important topic because it is linked with Newton's first law. You must understand the law of inertia properly so that you can clearly understand the Newton's first law. So inertia is simply, it is the resistance to change.
If a body is under rest, then it will continue to remain in rest. If it is in constant motion, then it will continue to do so. That is, it will continue in a uniform motion. So it is simply a resistance to change. It opposes the change. Whatever it was doing previously, it tends to continue the same property unless until some external force is acting on it. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा? न तो क्या होगा कि वो जैसे जो भी स्टेट कंटिन्यू कर रहा है वही स्टेट में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा एग्जांपल देखेंगे। अभी देखिए, तो यहाँ पर हमने एक ग्लास लिया हुआ है और ग्लास के ऊपर एक सीट और उसके ऊपर एक कॉइन रखा गया है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने फोर्स अप्लाई किया directly on the cardboard. We applied the force directly on the cardboard. Then what happened? The cardboard tend to move. कार्डबोर्ड मूव कर गया, लेकिन जो कॉइन है उसके ऊपर तो डायरेक्ट फोर्स हमने नहीं अप्लाई किया हुआ है, उसके ऊपर देर इज नो डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स. दैट्स व्हाई द कॉइन रिमेन्ड एट द सेम स्टेट and it fall inside the glass. So here you see the coin, this coin, it was previously in the rest condition. So when there is no external force, it is acting on the coin, so it continue to remain at that position only. It does not change its place. Whereas the cardboard, it got the direct force from our fingers, so it changed its place. It started to move, but the coin does not move. It falls inside the glass. This is one of the example of inertia. So inertia is basically again divided into three types of inertia, that is inertia of rest. This is a pure example of inertia of rest. Similarly, the another one is inertia of motion and another one is inertia of direction. These are the different types of inertia we face in our day-to-day life. So now let us discuss the other two types of inertia, that is inertia of motion and inertia of direction. This example which I have given is of inertia of rest. Okay, so let us take an example of our school bus. So all of you must be traveling in your school bus. You all must have traveled. Here you see, suppose a man or a student who is standing inside the bus, and initially let us the bus be in the rest condition. So when the bus is in rest condition and the student is standing here, you can see what happens when the bus suddenly starts to move with certain velocity. The student will experience a force in the backward direction, that is in the opposite direction of motion. In which direction the bus starts to move, the student experiences a force in the opposite direction. So this is also a case of inertia of rest. Here you see, the previously the student was in the rest condition. The student was in rest condition, but when the bus suddenly started to move, जबकि बस स्टार्ट हो गया कि स्टूडेंट्स का जो लोअर पार्ट से, जो कि बस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, the lower part which is in direct contact with the bus, it tends to move with the bus. But whereas the upper part is not in contact with the bus, so due to the property of inertia of rest, it will continue, or it tries to continue to remain at that position only. It does not try to change its position or change its state of rest. Okay, this is what we call inertia of rest. So in this case, what happens is actually the lower parts move forward, whereas the upper parts tends to remain at that position. So in this case, the student will feel a force, or the shape may be like this. The student will feel a force along this direction. So actually this is not a force, this is the inertia, this is the inertia of rest. That's why this apparent force is a false force. This is not a real force. Okay, this tends it feels like we're experiencing a certain force. Okay, so this force is what we call the pseudo force. Okay,
Pseudo force is the false force. The pseudo force is experienced. ये क्यों एक्सपीरियंस हुआ हमें? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम थे, हम पहले रेस्ट में थे, तो लोअर पार्ट्स फॉरवर्ड मूव हो गया, बॉडी का जो अपर पार्ट रह गया वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसीलिए वो हमें ऐसे लगे कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहे हैं। तो इसी तरह हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। सेम वे में इनर्शिया ऑफ मोशन, जबकि बस मोशन में होगा, when the bus is in the motion continues to move with certain uniform velocity, then our whole body it also continues to move with the bus. But when suddenly brakes are applied, जब ब्रेक्स अप्लाई होगा तो क्या होगा कि बॉडी का जो अपर पार्ट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में अगर बस से नहीं है तो इट विल कंटिन्यू to move in that forward direction. Again, we are experiencing a pseudo force. So this is a certain case of inertia of motion. तो यहाँ पर हम मोशन में थे, यूनिफॉर्म मोशन में थे, तो वो हमारा जो अपर पार्ट रह गया वो कंटिन्यू कर रहा है कि मोशन में ही रहने के लिए, वो टेंड कर रहा है कि वो मोशन में ही कंटिन्यू करे। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली जब भी हम डायरेक्शंस को चेंज करते हैं कि sudden there is a sharp turning in the road, then we experience inertia of direction. Clear all of you? So these are the different types of inertia. Inertia आप इतना ही कंक्लूड कीजिए कि inertia जो है कि inertia में वो रेजिस्ट करेगा चेंज करने के लिए, जो भी स्टेट में है, ठीक है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। So this is all about inertia, and we all have discussed the three types of inertia. Now let us go to the Newton's first law of motion. Okay, so here you see Newton's first law of motion. It is simply the exact meaning of the inertia. So Newton's first law is also called as the law of inertia. Here you can see I have written, it is also known as the law of inertia. Here you can read out the statement that a body always remains in a state, okay, in a state of rest or in uniform motion, ठीक है। एक बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस अंटिल जब तक उसके ऊपर सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो तभी तक वो रेस्ट में अगर है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में अगर है यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू करेगा। यही तो होता है इनर्शिया। अभी तो हमने पढ़े थे इनर्शिया के बारे में, द सेम मीनिंग इनर्शिया, ठीक है। तो इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ही लॉ ऑफ इनर्शिया ही हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, देखिए क्या पॉइंट है। यहाँ पर बताया कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। यस, ऑब्वियसली करेक्ट। अगर एक बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नो नेट फोर्स इज देयर, ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। So whenever there is a net external force is zero, acceleration is zero, that means there is no change in velocity, velocity remains constant, ठीक है। तो अभी देखिए और एक स्टेटमेंट क्या है, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो। एक्सेलरेशन कब नॉन जीरो होगा, एक्सेलरेशन, यस, आप खुद ही बता सकते हैं एक्सेलरेशन कब नॉन जीरो होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स, जब देर विल बी ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, whenever the external force is present it is non-zero, whenever the external force is there in that case the acceleration won't be zero। तभी acceleration जीरो नहीं होगा, तभी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा। वो रेस्ट में है तो कंटिन्यू करेगा मूव करने के लिए, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो वेलोसिटी है वो पहले कांस्टेंट था, अभी उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, इसी तरह उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। यही था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। वेरी सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से ये लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है अच्छे से वीडियोस को देखिए, आसानी से पूरे अच्छे से हम जो भी न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एक्सरसाइज सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो अभी चलिए हम न्यूटन सेकंड लॉ की ओर चलते हैं। उससे पहले न्यूटन सेकंड लॉ की ओर चलने से पहले हम मोमेंटम के बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम जो फिजिकल क्वांटिटी है वो यूज होगा न्यूटन सेकंड लॉ में। ठीक है, हियर यू सी दैट मोमेंटम, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे में। Momentum, very simple. It is a physical quantity. We all know it is simply a physical quantity which is the product of, yes, is the product of mass and velocity. Mass और velocity का जो product है उसे हम momentum कहते हैं. It is denoted by the symbol P. P symbol से हम denote करते हैं. P vector भी हम लिख सकते हैं इसे. P vector अगर लिखेंगे तो velocity vector भी लिखना होगा, या फिर सिंपली p लिखेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम. p इज इक्वल टू m इंटू वी, या इतना ही याद रखना है. ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में रहेगा मोमेंटम का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसका है केजी मीटर पर सेकंड. ये आप खुद भी पता कर सकते हैं. मास का हो गया केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड. ठीक है, ओके. तो और एक बात कि हम अगर चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहेंगे, दैट इज डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, इट विल बी सिंपली द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, ये थोड़ा हम यूज करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ में. Change in momentum, it can be written as final momentum minus initial momentum. ठीक है, so this is all about the momentum. Now let us go to the Newton's second law of motion. Okay, this is the real law of motion. Newton's second law is called the real law of motion. एग्जाम, स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि प्रूफ दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, उसका भी हम प्रूफ करेंगे. अभी आगे जाके प्रूफ करेंगे. जब तक हमारा थर्ड लॉ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक प्रूफ करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? ओके, सो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है. स्टेटमेंट्स पहले देखेंगे और उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे. देखिए, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छे से देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ओके, some students say that Newton's second law is simply F is equal to ma. This is not correct. F is equal to ma, it is a formula. It is a formula that is derived from Newton's second law. But you cannot say that Newton's second law states F equal to ma. Okay? Newton's second law का जो कंसेप्ट है उसे अच्छे से समझना होगा. ये जो फॉर्मूला आया है ये इसका न्यूटन सेकेंड लॉ को डिराइव करने के बाद ये एक उसका स्पेशल केस है. और भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो अच्छे से समझिए. अभी अच्छे से स्टेटमेंट्स को देखिए. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज गिवन द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन. चेंज जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में वो चेंज आएगा. ठीक है, ओके. तो देखिए अभी इसका अंडरस्टैंड हम करते हैं अच्छे से, इसका मीनिंग हम अच्छे से समझते हैं. ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिख दिए इसका मीनिंग अभी अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. So here I have considered simply a ball whose mass is m and its velocity, it is having certain initial velocity of u, and after some time let the ball changes its velocity to v. Okay, यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी u से v को चेंज हो गया. कैसे चेंज हुआ? हाउ द वेलोसिटी हैज चेंज? यस, we must have applied some force. Without the application of force,
वेलोसिटी कैनॉट चेंज। क्लियर ऑल ऑफ यू? देखिए यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ, then the result is there is a change in the velocity. You can see the velocity has changed from u to v. That means here the initial momentum p initial would have been m into u, and p final would have been m into v over here, mass into velocity. Okay, so the momentum has changed from mu to mv within a certain interval of time. कुछ टाइम के अंदर ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कर रहा है कि जितना ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे, द मोर द फोर्स यू अप्लाई, द चेंज इन मोमेंटम विल बी दैट मच क्विकर, उतना जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। When you are, suppose imagine you are pedaling a cycle, you are pedaling a cycle, slowly you are pedaling the cycle, slowly, very slowly you are applying the force. Then what happens? The velocity changes slowly, the velocity will change, it will increase very slowly. But what happens in the case when you pedal the cycle very quickly? The more faster rate you start to pedal, then what happens? You are applying more amount of force. Then the velocity or the momentum changes in very small time. ओके, बहुत ही कम टाइम के अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतने कम टाइम में मोमेंटम चेंज होगा। यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। क्लियर? उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का वर्ड हमने यूज किया, दैट मीन्स टाइम इज इन्वॉल्व ओवर हियर। तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम बोलने से नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो अभी चलिए इसका डिराइवेशन करते हैं। देखिए हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द मोमेंटम, to the rate of change of momentum, that is delta P upon delta T, or this can be written as F equal to, removing the proportionality, we apply proportionality constant K over here, and it will be delta P upon delta T. Clear? Okay, so this is one expression, and when here you see when the here the K value, that is the proportionality constant here, is 1. Clear? So the formula comes out to be F is equal to delta P upon delta T. Clear? So this is the Newton's second law. So we'll explain this, we'll derive some more forms of Newton's second law from this. Here you see, if the time, that is the delta T, tends to 0, दैट मीन्स बहुत ही कम टाइम हम लेंगे, बहुत ही कम टाइम कंसिडर करेंगे, तो मोमेंटम भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चेंज होगा। तो इन दैट केस वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। एफ we can write as F is equal to dp upon dt. Okay, so these are the two different expressions we can use. So this is what the basically the Newton's second law. This formula further can be written like F is equal to, in place of delta P, just now I have told you that is the change in momentum kya tha, P final minus P initial by delta T, or F can be written as P final is mv minus P initial is mu upon delta T. Clear? Okay, so now you can take force, mass as common, m into v minus u by delta T. So this is one of the formula. Some numericals are there,
where this formula can be directly we can use to find the force. Okay, please note down this formula. This is one of the important formula, and from here you see here we'll derive two more cases, that is F is equal to dp. P in place of a momentum, let us put mv by dt. Okay, now what happens, there are two cases. In the first case, here I am considering that mass is constant, mass of the body is constant, and the velocity is not constant, velocity is variable. So in this case, when you differentiate, that is the constant mass m into dv upon dt. So as we all know, dv upon dt is how much? What is the value? dv upon dt. Yes, it is acceleration. So from here, the force F is equal to ma is derived. यहाँ से आ गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, ये केस हो गया. और एक केस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी हो गया, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं डिस्कस. देखिए, तो यहाँ से मैं हम सेकंड केस की ओर लेता हूँ आपको. सेकंड केस में अगर मास वेरिएबल है एंड वेलोसिटी कांस्टेंट है. यस, आप अभी सोचेंगे कि मास वेरिएबल कैसे होगा. मास वेरिएबल कैसे होगा, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है. देखिए, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर कि मास भी वेरिएबल हो सकता है. जैसे कि एक रॉकेट का एग्जांपल हम ले सकते हैं. व्हेन द रॉकेट इज फायर, द फ्यूल्स आर कंज्यूम्ड. व्हेन द फ्यूल्स आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, the mass of the rocket it decreases. Okay, this can be one case. Similarly, more cases are there. While solving numericals will come about different cases. So here you can see that when the mass is variable and velocity is constant, in that case the force can be written like F is equal to v into dm by dt. As this velocity is constant, so v into dm upon dt. This is one of the formula of Newton's second law. So these are different formulas we have got from Newton's second law. So do not think that Newton's second law is simply F is equal to ma. Beyond this, we also have this formula and also have this formula. So these are the different forms of different formulas, different cases. According to cases from the numerical, you will check which formula will suitable the best. You will use that formula. Okay. So I hope you all understand the Newton's second law properly. Okay. So now let us move on to the next topic after Newton's second law. We have, I think we have a numerical. Yes, we have a numerical over here. So this is the basically numerical from NCERT example 5.2. So we'll discuss, we'll do this numerical. Let us select a good pen. So देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि बुलेट ऑफ मास 0.4 kg. Okay, the mass of the bullet is given 0.04 kg. ठीक है, तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं. मास ऑफ द बुलेट इज गिवन 0.04 kg. ठीक है, मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट यू इज 90 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड. enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. It is stopped after a distance of 60 centimeter, that is the displacement x is s is equal to 60 cm. Let us convert it into meter, that is 0.6 meters. ठीक है. Okay, so what is the average resistive force exerted
by the block on the bullet. Average resistive force we have to find over here. Clear? Okay, so this is basically purely Newton's second law concept will be used here. So you can see that we'll use the formula F is equal to mass into acceleration over here, because the mass is given in this question, and from these two given data we can find that acceleration. One more data is also there. Since the bullet comes is stopped, it is written here that it is stopped. You can see that it is stopped after a certain distance. That means the final velocity will be 0 meter per second. Clear? Okay, so from these data you can find the acceleration, right? Acceleration will be how much? From the equations of motion you can use the formula. Acceleration will be u square by 2s. Since the velocity is 0, so you can use the formula directly. Acceleration equal to minus u square by 2s. If anyone is confused over here, I am using simply the formula, that is v square minus u square equal to 2as. On simplifying this, I am getting acceleration equal to minus u square upon 2s, and now I will put the values over here of u s. Okay, by putting the values you can see u is given 90 square by 2 into 0.6. On solving this, I think you are going to get acceleration as minus 6750 meter per second square. This is the acceleration. Now after finding acceleration, you can directly find the force. The formula you can use, F is equal to ma, that is mass is given 0.04 kg into minus 6750. So the force is coming minus 270 न्यूटन. ठीक है, तो फोर्स आ गया कितना? 270 न्यूटन. तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? देखिए, आंसर में हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 270 न्यूटन. क्यों लिखेंगे 270 जबकि हमारा आंसर आया माइनस 270? देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि अब टू फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स. यू कैन सी द क्वेश्चन. व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स इज गिवन. एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, ये रेजिस्टिव वर्ड जो यूज हो गया, ये नेगेटिव साइन को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी रेजिस्टिव फोर्स है, वो मीनिंग हो गया कि नेगेटिव साइन रहेगा. तो इसीलिए फिर से नेगेटिव साइन हमें यूज नहीं करना होगा. हम अगर बोलें कि फोर्स कितना है, तो फोर्स माइनस 270 है, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स कितना है? रेजिस्टिव फोर्स 270 है. ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स हो गया 270 न्यूटन. Clear all of you? So this is a very simple concept question. You can solve this. Again, you try to solve this. So we'll also solve some more numericals. This is the example 5.3. You can see it is given that the motion of a particle of mass m is described by y is equal to y. It is given by y is equal to ut plus half gt square. Ut plus half gt square. Then find the force acting on the particle. Okay, again you see the displacement is given over here. Why? This is the displacement. So from displacement you have to find the acceleration. Then you multiply the acceleration with mass. Then you can find the force. ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएं कि डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. देखिए, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो क्या आएगा? डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी आएगा. तो वेलोसिटी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी. टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो यू टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का हो गया हाफ इंटू जी इंटू 2t. ठीक है, यह आ गया हमारा हाफ जी टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन. तो यह आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन.
फिर से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट द वेलोसिटी, दैट इज dv बाई dt। तो u तो सिर्फ एक कांस्टेंट रह गया, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। और यहाँ पर हमारा ये तो 2 को 2 कैंसिल हो गया, और जी टी का कितना होगा डिफरेंशिएशन करने से जी होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया कितना, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया जी आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पर जी के इक्वल हो गया, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फोर्स कितना होगा, वी ऑल नो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इक्वल इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन आई एम पुटिंग जी। तो यहाँ पर एम जी अमाउंट का फोर्स उस सब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 5.2 5.3 सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, इम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर 1 अभी ख़त्म होगा, उसके बाद इसमें देखिए हमने कौन से टॉपिक ख़त्म किए। इसमें पहले हम इनर्शिया डिस्कस किए, उससे पहले हम फोर्स डिस्कस किए, और टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस किए, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और मोमेंटम के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद न्यूटन्स का सेकंड लॉ, उसका डिफरेंट फॉर्म्स हो गया, डिफरेंट फार्मूलास हो गया। तो डिफरेंट फार्मूलास से हम अभी सिर्फ एक ही फार्मूला का यूज़ हुआ है, एफ इक्वल टू एम ए का। ठीक है, और अभी हम इम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर जो आएगा, उसमें से फर्स्ट लेक्चर का जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है, थियोरिटिकल टॉपिक, और उसमें तो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कवर हुआ। उसके बाद कॉम्पिटिटिव या फिर एंट्रेंस में या फिर स्कूल के एग्जाम में कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है। ठीक है, कुछ एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, या फिर एस.एल. अरोरा के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, उसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा ये सीरीज रहेगा। तो जो फर्स्ट लेक्चर, दैट आर ऑड लेक्चर्स जो रहेगा, 1 लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर, इसमें हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स उसके अंदर इंसर्ट रहेगा। और जो इवन लेक्चर्स रहेगा, उसमें उसका प्रीवियस ऑड लेक्चर का नीट का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, और स्कूल के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी टेंशन मत लीजिए, आराम से अच्छे से स्टडी को एंजॉय कीजिए, और अच्छे से अपने नीट की जेई की तैयारी कीजिए। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ कि जितना भी हो सके हम आपको, जितना भी सपोर्ट हो सके, जितना भी आपका डिफ़िकल्टी है वो सब दूर करें। ठीक है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, दैट इज़ इम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो गया इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। आई थिंक न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम थर्ड लेक्चर में ले जाएंगे, और यहाँ पर इम्पल्स में इस लेक्चर को हम एंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ में उसमें और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो एक ही लेक्चर में पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी हम इम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए इम्पल्स, इम्पल्स ये हम पहली बार क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, 9th में आई थिंक नहीं था इम्पल्स। तो देखिए इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स, it is given by, it is the effect of force, and the force on a body for a short period of time interval is called impulse. ठीक है, if a certain amount of force is acting on a body for a very short period of time, कुछ टाइम के लिए, जैसे कि हमने हार्मर में नेल को हिट किया, या फिर बैट में बॉल को हिट किया, ये सभी हो गया हमारा इम्पल्स। देखिए टाइम ऑफ कांटेक्ट जो रहता है बहुत ही कम रहता है। सपोज नेल है, उसमें हम हार्मर को हिट किए, तो जो टाइम ऑफ कांटेक्ट नेल का और हार्मर का जो रहा बहुत ही कम टाइम के लिए, सो टाइम इंटरवल बहुत ही कम रहेगा यहाँ पर। लेकिन जो फोर्स रहेगा
वो क्वाइट लार्ज अमाउंट का फोर्स रहेगा। तो वो जो इफेक्ट क्रिएट करेगा उससे क्या होगा कि वो दूसरे बॉडी में उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, लार्ज अमाउंट का फोर्स अप्लाई हुआ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हुआ। तो अभी हमने ही पढ़ा था कि जो फोर्स अप्लाई होगा न्यूटन सेकेंड लॉ में, वो जितने कम टाइम में अप्लाई होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम को चेंज करेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा मोमेंटम को चेंज करेगा। अभी हम नेल को हैमर से हिट करेंगे, ऐसे धीरे से हिट करेंगे तो क्या होगा? क्या नेल वॉल के अंदर जा पाएगा? नहीं। वो हम क्या करते हैं कि जितना कम टाइम में ज़्यादा अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हैं तो इजीली उसका मोमेंटम चेंज होता है, तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इम्पल्स हो गया कि अगेन डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, it is the effect of force, the force on a body for a short time interval, थोड़े टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए जो फोर्स रहेगा उसे हम इम्पल्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए, हार्मर हिटिंग ए नेल, बैट हिटिंग ए बॉल, एक्सेट्रा। दीज आर सम ऑफ द वेरी important examples of or prominent examples of impulse. Okay, it is denoted by the symbol J। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंबल देखिए, इसे जे सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जे वेक्टर भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो इसका प्रूफ भी हम करके दिखाएंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आ गया। इम्पल्स जो है ये है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। दो फॉर्मूला है, देखिए इम्पल्स का दो फॉर्मूला है। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, here you can see it is the product of force with time duration, जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हुआ। तो और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि चेंज इन द मोमेंटम, मोमेंटम जितना चेंज होगा। सपोज इनिशियल मोमेंटम 10 था और फोर्स अप्लाई के बाद मोमेंटम हो गया 50, तो कितना चेंज हुआ? मोमेंटम 50 माइनस 10, 40 चेंज हुआ। ठीक है, तो चेंज इन द मोमेंटम, that is J, we can say that it is simply the change in the momentum delta P। J can be written as J equal to डेल्टा P हम लिख सकते हैं, या फिर इम्पल्स को हम J इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई विथ डेल्टा T भी लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा T भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हो गया इम्पल्स का। क्वेश्चंस को देख के, न्यूमेरिकल्स को देख के कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए उसका मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया। तो देखिए ये सिंपली न्यूटन्स के जो सेकंड लॉ है उससे डिराइव किया गया है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, हमने अभी उसमें एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। यस, अभी हमने डिराइव किया हुआ था न्यूटन का सेकंड लॉ से। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी जो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस फोर्स के साथ। तो ये हो गया फोर्स इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू डेल्टा टी इक्वल टू कितना रहेगा आर एच एस में, m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो फोर्स इंटू टाइम जो क्वांटिटी एल एच एस में है वो आर एच एस में m इंटू वी माइनस यू के साथ इक्वल हो गया, दैट इज फोर्स इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। So what is mv minus mu? P final, yes it is P final minus P initial, clear? So that is the change in the momentum। ठीक है, तो यही है इम्पल्स, यही है इम्पल्स। तो यहाँ से आ गया देखिए फोर्स इंटू डेल्टा टी जो आ गया, इससे आ गया हमारा डेल्टा पी। तो इम्पल्स
जब एक्ट करता है एक बॉडी के ऊपर तो उसका क्या चेंज होता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। द चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट वी कॉल द इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला अभी देखिए यहाँ पर आ गया कि एफ इंटू डेल्टा टी जो है यही इम्पल्स का फॉर्मूला है, या फिर डेल्टा पी जो है यही इम्पल्स का फॉर्मूला है। तो बेसिकली हम अगर इम्पल्स का फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे तो दो फॉर्मूला हमारा हो गया इम्पल्स का। देखिए एक तो फॉर्मूला हो गया कि इम्पल्स जे इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, एक फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला हो गया जे इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और यू कैन राइट दैट एम इंटू वी माइनस यू, और इन दिस फॉर्मूला आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट जे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हमें पूछा जाता है वो क्वेश्चंस को देख के हमें यूज़ करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें सही रहेगा, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लियर ऑल ऑफ यू अबाउट इम्पल्स। एक चीज़ याद रखिए, इम्पल्स का दो फॉर्मूला है, दो डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं। क्या है दो डेफिनेशन, देखिए इम्पल्स का पहला डेफिनेशन है व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और यू कैन से दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज डेल्टा टी। तो उससे एक फॉर्मूला आ गया फोर्स इनटू डेल्टा टी। और दूसरा डेफिनेशन क्या है, इम्पल्स कैन ऑल्सो बी said as it is the change in the momentum। तो उससे दूसरा फॉर्मूला आ गया इम्पल्स जे इज इक्वल टू डेल्टा पी, और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज एम इंटू वी माइनस वी। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो यही है इम्पल्स का फॉर्मूला। इम्पल्स का अगर एसआई यूनिट हम डिस्कस करेंगे तो इम्पल्स का फिर से दो एसआई यूनिट होगा इम्पल्स का। एक है फोर्स इंटू टाइम जो है उसका एसआई यूनिट, उसके हिसाब से अगर एसआई यूनिट हम देखेंगे तो फोर्स का हो गया न्यूटन, टाइम का हो गया सेकंड, तो एक हो गया न्यूटन सेकंड। या फिर इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसके हिसाब से चेंज इन द मोमेंटम डेल्टा पी का एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो मोमेंटम का ही है। ठीक है, तो दो एसआई यूनिट हो गया इम्पल्स के। क्लियर। तो यही है इम्पल्स, और अब हम एक न्यूमेरिकल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को अभी रीड कीजिए और माइंड में डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना हमारे लिए सही रहेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5.4 क्वेश्चन दिया कि बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल स्पीड जो दिया हुआ है कि ये 12 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इनिशियल स्पीड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। ठीक है, तो पहले डाटा कलेक्शन लिखेंगे। तो डाटा में दिया कि मास ऑफ द बॉल कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉल 0.15 kg, it is the mass of the ball given। Okay, now initial velocity of the ball is given, 12 meter per second is the initial velocity, and final velocity, you see final velocity of the ball will be minus 12 meter per second। क्लियर। माइनस 12 मीटर पर सेकेंड कैसे हो गया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमने, ये जो बॉल है ये बॉल है, सपोज लेट अस कंसिडर दिस टू बी बॉल, सपोज इट इज मूविंग इनिशियली अलोंग दिस डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर बैट्समैन जो है वो बैट्समैन, यहाँ पर बैट्समैन बॉल को स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिट करता है। तो बॉल क्या होगा कि बॉल उसी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया आफ्टर इट हिट्स द बैट, इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इट विल बी माइनस 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इससे हम चेंज इन द मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे।
तो अभी देखिए हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना था। इनिशियल मास था 0.15 kg। तो इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम इज 0.15 m इंटू v माइनस u। 0.15 इंटू 12 माइनस ऑफ माइनस 12। ठीक है, तो 0.15 into 24. So the answer is coming to be 3.6 kg ms minus 1. Clear? So this is the answer to the question of impulse. So in this questions, since there is no time is given, so I have used the formula, that is the change in momentum. Impulse formula J I have used as J equal to change in momentum delta P formula I have used. If time would have been given, then we could have used the formula, that is force into delta T formula, which would have been used. Okay, clear. So one important note, just one important note is given here. You see, that is the area under the graph of force and time gives the value of impulse. तो देखिए पहले हम इम्पल्स जो था उसको फाइंड आउट करने का दो तरीका फाइंड आउट किया हुआ था। अभी हमारे पास तीसरा तरीका आ गया कि हम इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए ग्राफ का भी हेल्प ले सकते हैं। कौन से ग्राफ का? कि फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है, फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया को फाइंड आउट करना है, तो उससे आपको इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सपोज यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स और टाइम के बीच एक ग्राफ है। वाई एक्सिस में फोर्स है और एक्स एक्सिस में टाइम है। If the graph is like this, then what we have to do is we have to simply find out the area under this curve. Area under this, the area of this graph will give you the value of impulse. Clear? So tell me how many ways or how many methods are there to find out impulse. We have discussed in today's class. There are three methods. First one is you can use the formula J equal to F into delta T. Second formula you can use J equal to M into V minus U, like the problem which we have solved. And the third one is you can find the area of force and time graph that will give you the value of impulse. Okay, so this is all for today's class. We have discussed some important topics of the laws of motion chapter, and also 3 to 4 examples of NCERT. So in the video number 2, the next video will comprise of only numericals based on these topics. We'll try to give more preference to the PYQs of JEE and NEET, and also some predictable questions. We are working on it. So hope you like the video. Thank you everyone.